Assalamu alaikum, dear 9th class students. I am here with the exercise of the lesson The Tempest Part 2nd. In this video, I am going to teach you how to answer the questions given at the end of the lesson. Dear students, see page number 45. Let's first of all try to answer the questions from 1 to 9. Dear students, as you can see on the screen of your phone, the first question is, what did Marinda at first think Ferdinand was and why? Was Ferdinand and Marinda's love at first sight? क्वेश्चन हमारे लिए है कि मरिंदा ने जब फर्डिनेंड को देखा तो उसने क्या सोचा और क्यों सोचा? क्या फर्डिनेंड और मरिंदा की मोहब्बत पहली नज़र की मोहब्बत थी? हमने कहानी को ऑलरेडी पढ़ा है और अंडरस्टैंड भी किया है, सो इट्स नॉट एनी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Its answer is, when Marinda saw Ferdinand, she thought that he was a spirit. I'm going to repeat this line. When Marinda saw Ferdinand, she thought that he was a spirit because she had not seen any young human being. She had only seen her father, who was an old man, and the ugly Caliban. Yes, Marinda and Ferdinand's love was at first sight. The second question for us is, why did Prospero pretend to think that Ferdinand was a spy? While reading the text, I have already told you that pretend means to show something that's not true, that's not real. Pretend का मतलब है दिखावा करना. तो प्रॉस्पेरो ने क्यों दिखावा किया कि फर्डिनेंड एक सिपाही है, एक जासूस है? Prospero pretended to think that Ferdinand was a spy because he wanted to test his love. He wanted to know whether Ferdinand loved Marinda or not. Question number 3. What was the task that Prospero gave Ferdinand? Prospero ने फर्डिनेंड को कौन सा टास्क दिया? Prospero gave Ferdinand the task of piling up of heavy logs. What made Ferdinand's labor seem light? यानी कि फर्डिनेंड का जो काम था वो किस तरह हल्का हुआ? When Prospero gave Ferdinand the task of piling up of heavy logs, Marinda stole out of her room and made her presence there. Marinda's presence and their love talk made Ferdinand's labor seem light. Question number 5. What were the king and his party doing in the meantime? बादशाह और उसकी पार्टी इस पूरे वक्त में क्या कर रही थी? In the meantime, the king and his party were searching Ferdinand, who they feared was drowned. किंग और उसके साथी फर्डिनेंड को तलाश कर रहे थे, जिसका उनको डर था कि शायद वो डूब गया है. Why were they amazed to see Prospero? जब
किंग और उसके साथियों ने प्रॉस्पेरो को देखा तो वो क्यों हैरान हुए? They were amazed to see Prospero because they thought that Prospero might have drowned, because 12 years before they had put him into an old and damaged ship. Question number 7. Prospero told the king that he had lost his daughter in the tempest, and in a sense he was right. Can you say in what sense? Prospero ने अपने भाई एंटेनियो और उसके साथियों से कहा कि उसने भी मरिंदा को खो दिया टेम्पेस्ट में, तो वो किस तरह से सही था? Yes, Prospero was right when he told the king and that he had lost his daughter in the tempest because he had lost her to Ferdinand. Question number 8. Why did Prospero give up his magic powers? Give up is a phrasal verb. It means to surrender. Prospero ने अपने मैजिक पावर्स को क्यों छोड़ दिया? After reconciliation, as we all know that Prospero buried his books and broke his magic wand because he had achieved all what he had wanted. He had got his dukedom back. Question number 9. What was Ariel's last service to his master? Ariel का आखिरी काम क्या था अपने मालिक के लिए? Ariel provided the ship favorable winds in which Prospero, Antonio, Ferdinand, Marinda, Gonzalo, and all the others left for Naples. It was his last service to his master. Now let's try to solve the language work. The question is, find from the lesson words or phrases which mean the following. Here are meanings of some words that have been used in the text. We have to find out the words. The first one is a person who tries to get secret information about an enemy country. एक शख्स जो दुश्मन मुल्क से information खबर ले आए. That is called spy. जासूस, spy. Next one, examine two things side by side. See how they are different or like each other. Compare. Next, number 1, a phrase meaning meanwhile. The word that has been used in the text is meantime. Number 2, anymore, to a greater distance, at a distance. Number 3, a hard test, trial. Number 4, an adjective meaning having done wrong, having done a crime or a sin. एक दफ़ा फिर मैं ये पढ़ना चाहूँगा. Having done wrong, having done a crime or a sin. Guilty. Guilt. Number 5, bad, wicked, sinful. Guilty. Number 6, an action of any kind, a thing that is done. It's deed.
Number 7, an action such as murder or stealing, a very bad action. Crime. इसके बाद एक और, be sorry for something one has done. Repent. एक और है यहाँ पे, destruction of ship by storm, etc. It's wreck, shipwreck. और लास्ट वन जो है, that's visible. इसके लिए है जो वर्ड लेसन में यूज हुआ है, टेक्स्ट में यूज हुआ है, वो है appeared. अब यहाँ पे कुछ और ग्रामेटिकल वर्क है. गिव द एंटोनियम्स ऑफ. हमें इनके एंटोनियम्स लिखने ही. एंटोनियम मीन्स द वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग. फर्स्ट वन इज गुड फॉर्चून. गुड फॉर्चून के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं जो इसका अपोजिट. गुड फॉर्चून का मतलब है अच्छी किस्मत, और इसके लिए जो एंटोनियम है वो है बुरी किस्मत, यानी कि बैड लक. फॉर यहां पे है, फॉर का मतलब है दूर, और इसका एंटोनियम है नजदीक. वो तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं नियर. इसके बाद है इनोसेंट. इनोसेंट मीन्स बेगुनाह, तो इसके लिए हम एंटोनियम यूज कर सकते हैं गुनाहगार. तो गुनाहगार के लिए जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो है गिल्टी या सिंफुल. एक और वर्ड है यहाँ पे इवल. इवल के लिए जो हम एंटोनियम यूज कर सकते हैं वो है गुड डीड. गुड डीड. एक और है यहाँ पे लॉस. लॉस के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट या गेन. यहाँ पे एक और वर्ड है कवर्ड. कवर्ड बुज़दिल को कहते हैं, और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वर्ड ब्रेव और बोल्ड. परिश. परिश मीन्स टू डाई. इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सर्वाइव. रिमेंबर. रिमेंबर का मतलब है याद करना या याद रखना. इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, एंटोनियम यूज कर सकते हैं फॉरगेट. और एक और है यहाँ पे लॉयल. लॉयल हम वफादार को कहते हैं, और इसके लिए जो एंटोनियम यूज हम कर सकते हैं दैट्स डिसलॉयल. सो आई थिंक दिस इज